Hello friend, most welcome in my channel. We are back with some news update. आजकल हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के बारे में थोड़ा सा गैप लिए हुए हैं. वी नीड टू बी अंडरस्टैंड सम नोट्स अगेन एंड वी विल बैक वेरी सून, मे बी टुमारो या आफ्टर दैट टुमारो वी विल बैक अगेन. आज हम बात करेंगे कोविड-19 इन्फेक्शंस के बारे में. कोविड-19 का जो पैंडमिक हो चुका है, इंडिया में 1 मिलियन के ऊपर केसेस जा चुके हैं. कोविड-19 पेशेंट्स में बहुत सारे सिम्टम्स डेली अपडेट हो रहे हैं. किसमें पहले लंग्स इन्फेक्शंस होता था, आफ्टर देन देयर इज कॉजिंग नंबर ऑफ अदर डिसीज जस्ट लाइक देयर सिम्टम्स इज GI प्रॉब्लम, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, and also they are facing some problem of the taste and smell loss problems. Why this happens? Because of some problems? Yes, something is that. You know that COVID-19 patients, the virus, coronavirus, SARS coronavirus is the cause this infection diseases. Entry point, how they enter inside the cells, those cells who have some receptors which can clip this and they can enter this. And viruses have the two type of life cycle. One is lytic and one lysogenic, but this virus is a lytic process going on. The receptor is known ACE2 receptors. That receptor is responsible for the accepting and the creating the release of the viruses from the outside to inside the cells. This is enzymes. Receptor also has some other roles. Angiotensin converting enzymes. So that's the problems when there is a lots of the number of these receptors present in that cells. If the cells can infected and they go for the lytic process, the cells will destroy. So also where these receptors are finished. That's the problems. यही मेन प्रॉब्लम्स होती जा रही इन वायरसेस की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से. जहाँ जहाँ पे इन्फेक्शंस हो रहे हैं, जहाँ वो सेल्स डेथ हो रही है, उनके साथ ये रिसेप्टर्स भी डेथ हो रहे हैं. जस्ट लाइक बहुत सारी ये रिसेप्टर्स सेल्स हमारे इंटेस्टाइन से पाई जाती हैं. दैट आफ्टर द इन्फेक्शंस द सेल्स आर डाई, द रिसेप्टर्स आर डाई, डेथ खत्म. एंड दैट्स वाई द इन्फेक्शन कॉज gastric infections या GI infection is occur in the side the intestines. Second, smell and taste का loss हो जाना. This is also because most of the GI these receptors, ACE2 receptors, are also present in the nasal cavity regions where these viruses, after the lytic destruction of this virus finish, so the receptor who are going for the smell going for the taste are finished. That's why the patient who are infected by this, they have the problem. They are showing these symptoms also. The other symptoms is the rashes in the body skins. This is also related to them. One thing, the patient who have the infection of COVID-19, the severity is that the death of severity is not by the COVID infections, but because of the other secondary infections. That's why the COVID infection is syndromic infection. They had the number of the other disease causings like heart blockage, because this receptor is responsible for the another enzyme angiotensin 2, which is the problem, which is the making, वो जो इसका फंक्शन होता है कि ब्लड बैलेंस करना, ब्लड प्रेशर को बैलेंस करना. अगर ये सारे एंजाइम्स डिस्ट्रक्शन होंगे तो उस एंजाइम का अनरेगुलेशन होगा, तो ब्लड प्रेशर का बैलेंस डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से जो पेशेंट या इन्फेक्शन से है ह्यूमन बींग्स, उसमें ब्लड का रेगुलेशन नहीं होगा, हार्ट ब्लॉकेज होगा, आर्टरीज ब्लॉकेज होंगे, फॉर द blockage of the some artery problem या heart blockage, ह्यूमरिक डिजीज प्रॉब्लम्स. दिस इज द वन ऑफ द मेन डेथ का काजिंग्स है. और भी हैं प्रॉब्लम्स ऑफ द डायबिटिक पेशेंट्स है जो इम्यूनोलॉजिकल डिस्टर्ब हैं, उनका एंजियोटेंसिन से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, चाहे ब्लड प्रेशर का हो या अनदर प्रॉब्लम्स हो किडनी के, they will face the problem of this infections, death trials. So these are the symptoms which are responsible for these COVID-19 patients. I just want to update these things, and we will come back again some microbiology sections. What we finished that cell wall and nuclear membrane. Now we are going to start growth cycles and process of the logarithm, how the bacteria can grow and their process in the deep study now. After then we will start one by one bacteria, finish all the bacteria in my upcoming videos. Hoping you like them. Please subscribe my channel, and thank you so much for giving your time. See you soon.